Habit and external feature of fasciola hepatica. So firstly we will see about the habit and habitat. The trematodes belong to the class Trematoda, are all parasitic. They are commonly called flat moth or flukes on account of their flat tip-like form. Flukes inhabit liver and bile duct of vertebrate like cattle, sheep, goat, rabbit, pig, dog and man. Fasciola hepatica is commonly liver fluke of sheep. The systematic position shows the phylum Platyhelminthes, class Trematoda, order Digenea, genus Fasciola, species Hepatica. Fasciola hepatica is a digenetic trematoda whose life history was completely worked out by Thomas in 1883. It is of great parasitological and pathological importance. It causes the disease of fasciolasis, means the liver rot, that cause damage to the liver tissue and bile duct of the host. Now we will see the habit and habitat of Fasciola hepatica. Fasciola hepatica, here fasciola means small bandage and group hepar means liver. The sheep liver fluke lives as endoparasite in the bile passages of sheep. Its life cycle is digenetic, means completed in two hosts, a primary vertebrate host, the sheep, and a secondary or intermediate invertebrate host, the gastropod mollusk. The adult parasite is found in the primary host, while in part of life cycle as larval stage are found in the invertebrate host. Fasciola hepatica, in addition to sheep, also infect other vertebrate like goat, deer, horse, dog, ass, ox, and occasionally man. Its secondary hosts are either Planorbis species, Villainous species, or Limnia tracantula, all being freshwater gastropod mollusks. Fasciola hepatica is a worldwide in distribution. Particularly sheep and cattle raising area are the primary zones where human beings are also infected. In other Indian species, Fasciola gigantica indica is found in the bile passages of buffaloes, cow, goats and pigs. So this is the Fasciola gigantica picture, and this is the Fasciola hepatica. Consists of mouth, oral sucker, head lobe, gonopore, acetabulum and excretory pole. Structure of Fasciola hepatica or the external feature. It shows shape and size. The hepatica has thin dorsoventrally flattened lip shape, elongated and oval body. It measures about 25 to 30 mm in length and 4 to 12 mm in breadth. The maximum width is at about anterior third of the body form, where the body taper anteriorly as well as posteriorly. However, the anterior end is somewhat rounded while it's bluntly pointed posteriorly. Fasciola indica has its greatest width at about the middle of the body, and the posterior end is rounded. It is usually pinkish in color, but it appears brownish due to ingested bile of the most. So shape and size. The next is the external morphology. The next is the color. The color is usually pinkish, but the transparent body wall enable us to see the internal organ. Blackish or brownish vitelline gland, alimentary canal, which is appear as a brown due to ingested bile of host. It consists of the oral cone. The oral cone, the anterior of the body, form a prominent conical projection called the oral cone or head lobe, bearing a triangular aperture called mouth. So this is the structure of the Fasciola hepatica. You can see in this diagram. Okay. So the anterior end of the body is distinguished into a triangular oral cone or head lobe, giving its shadowed appearance. The head lobe at its tip bears a somewhat triangular aperture called mouth. There are two muscular sucker and oral sucker at the anterior end encircling the mouth, and a large ventral sucker or acetabulum situated mid-ventrally about 3 to 4 mm behind the oral sucker. So in previously diagram,
You can see here the mouth and the oral suckers are present. Okay. The sucker are cup-like muscular organ meant for attachment to the host by vacuum. sucker की मदद से वो host को attach हो सकते हैं. In addition to the mouth aperture, there are two permanent aperture on the body. One situated mid-ventrally in front of the ventral sucker is the common genital aperture gonopore. यहाँ पे जेनेटल अपेरेचर प्रेजेंट होता है इनमें, उनको उसको गोनोपोर बोलते हैं. एंड द अदर इज सिचुएटेड एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज द एक्सक्रीटरी पोर. और एक एक्सक्रीटरी पोर भी प्रेजेंट होता है. Okay, next, in addition to this aperture, a temporary opening of the dural canals aperture during the breeding season on the dorsal surface just anterior to the middle of the belly. Anus is wanting because alimentary canal is absent. So this is all about the habit and habitat of the Fasciola hepatica. Mostly the oral cone is the anterior end of the body, form a prominent conical projection is called as the oral cone or head lobe bearing triangular aperture called mouth. There are two small sucker anterior and posterior, ऐसे दो sucker present होते हैं. नेक्स्ट इसकी शेप एंड साइज होता है. इसी फैसियोला हेपेटिका की बॉडी सॉफ्ट ओवल और डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटन होती है, लिप लाइक होती है, और इट इज़ अबाउट 1.8 सेंटीमीटर टू 3 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 0.4 टू 1.5 सेंटीमीटर वाइड होती है. द बॉडी टैपर एंटेरियरली एज वेल एज पोस्टीरियरली होती है. ओके. एंड जो एंटेरियर सकर और ओरल सकर है, इट इज़ द कप शेप मस्कुलर ऑर्गन विथ माउथ सिचुएटेड एट द सेंटर. इट इज़ अबाउट 1 mm इन डायमीटर के होते हैं वो. इट एक्ट एज अ आइडियल सबटोरियल ऑर्गन सर्विंग फॉर एडेजन एज वेल एज इंजेशन. तो वो सर्कल की मदद से होस्ट को पकड़ के भी रह सकता है. एडेजन उसको बोलते हैं एडेजन एज वेल एज इंजेशन. जो उसको इंजेशन यानी डाइजेशन के लिए जो फूड चाहिए वो भी उससे वो सक कर सकता है इन द प्रोसेस ऑफ इंजेशन. Posterior sucker or ventral sucker is called as the acetabulum. It is 3.4 mm behind the oral sucker. Oral sucker के बिहाइंड में पोस्टीरियर सकर प्रेजेंट होते हैं. इट इज़ बाउल लाइक एडेसिव सकर होते हैं, सिचुएटेड मिड वेंट्रली विदाउट अपेरेचर, और इट इज़ अबाउट 1 mm इन डायमीटर होते हैं, और ये एडेजन के लिए इनका यूज़ होता है. माउथ इज सिचुएटेड, तो माउथ जो है ओरल सकर के सेंटर में प्रेजेंट होता है. गोनोपोर क्या है? तो गोनोपोर इज़ अ स्मॉल कॉमन, जो गोनोपोर है इट इज़ अ स्मॉल कॉमन जेनाइटल अपेरेचर होता है, और ये मिड वेंट्रली सिचुएटेड होता है एंड लिटल इन फ्रंट ऑफ द मैसेटाबुलम. एक्सक्रीटरी पोर इट इज़ लाइज पोस्टीरियर एंड स्लाइटली टुवर्ड द वेंट्रल सरफेस. और लॉरियल कैनाल है, इट इज़ द ये टेम्परेरी ओपनिंग विथ अपीयर्स ऑन डॉर्सल सरफेस प्रेजेंट होती है. ओके. एंड लिटिल एंटीरियर ऑफ मिडल ऑफ द बॉडी ओनली ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन रहती है. स्केल बॉडी ऑफ लिवर फ्लूक इज कवर्ड विथ ट्यूगमेंट्स क्यूटिकल फ्रॉम विच बैकवर्डली डायरेक्टेड माइक्रोस्कोपी स्केल और स्पिनिकल प्रोजेक्ट आउट. दिस स्केल प्रोटेक्ट द बॉडी, एंकर द बॉडी टू वॉल ऑफ हॉर्स बाइल डक एंड हेल्प इन लोकोमोशन. तो स्केल की मदद से वो लोकोमोशन कर सकता है प्लेटियल में. सो दिस इज ऑल अबाउट द हैबिट, हैबिटेट एंड देयर एक्सटर्नल फीचर.